Good afternoon, class 10th science, and I'm your teacher HEMLATA, and we are going to discuss the chapter control and coordination in chapter 7 in class 10 science CBSE, and I'm going to share a slide with you, and we are going to discuss the parts of the chapter control and coordination with a PowerPoint presentation. So I'm sharing the screen. There is a slideshow and you will be understanding by test. So as you can see, the control and coordination chapter was started, and the changes in the environment to which the living organism respond are called stimuli. ऐसे changes हमारे environment में, जैसे कि अभी डे है तो लाइट है सब जगह, तो दैट इज अ स्टिमुलस फॉर यू दैट वी आर ह्यूमन, वी आर active in day, so day becomes a stimulus for us. And if there is the pleasant weather outside, the temperature is normal, and there is also a temperature stimulus to our body, that temperature is good today. And the touch, the pressure which the body is experiencing, every change in the environment is called stimulus. So as you can see on the slide, heat, cold, touch, so we are watching and understanding the chapter control and coordination, class 10th. And in that, we are started with the slideshow. And here, the slide is, first slide is with you. Changes in the environment to which living organism responds are called stimuli. And I am your teacher, HEMLATA, with you. And we are discussing stimulus. What are stimulus? Any change in the environment, the first line as given in the slide, is that the changes like the temperature outside the environment, whether it is hot, whether it is cold, the presence of light or absence of light, the touch, the pressure of the things, all these are stimulus for the living organisms. And for these stimulus, the living organism produce some functions. Like if there is a good environment, there is a cool weather, then I'm not sweating so much. And if it is a hot weather, then I will be sweating and wiping with the sweat with my handkerchief. But I do not require it today because there is wind, there is air in the room. So heat, cold, temperature, pressure, these are the stimulus for which the living organism respond in the form of body movement. We perform certain body movements, and that way we respond. Coordination. For a proper and response to a stimulus, many organs of the body has to work together. So any proper response can be given by an organism if its body organs are functioning well together. The working together of the various organs in an organism produce a proper response to a stimulus called coordination. So this response to a stimulus is called coordination. When the various organs work together, they produce a coordination. In animal, coordination and control is done by nervous system as well as endocrine system. So in us, the control and coordination is done by two systems, the nervous system and the endocrine system. These systems are responsible for our control and coordination. In plant, control and coordination is done by chemical substances called phytohormones. So they do not have system. Plants do not have system, but they have the hormones for the
control and coordination. So by plant hormones, they do control and coordination. What is coordination? So in animals, control and coordination occurs through the system, nervous and endocrine. The nervous system, what is consist of? It consists of brain, it consists of spinal cord. Brain is inside our brain box or cranium, skull. Here inside our head, we have brain. And spinal cord is in the back, it is moving. हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से आगे निकलकर उसमें रहती है, और नर्व्स, इस स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जाती हैं हमारे पूरे बैक में, वो नर्व्स आती हैं, हैंड्स में वो नर्व आती हैं, लेग्स में वो नर्व आती हैं. सो नर्वस सिस्टम में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी. Receptor are the sense organ which receive stimuli and pass the message to the brain or spinal cord through the sensory nerves. Receptor हमारे skin, हमारे nose के membrane, हमारी tongue, ये हमारे receptors हैं. जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें समझ में आता है, तो यहाँ से हमारी सेंसरी न्यूरॉन अंदर मैसेज लेकर जाती है कि टेस्ट क्या है, हमें सावर लग रहा है, खट्टा लग रहा है, या फिर मीठा लग रहा है, या फिर सॉल्टी लग रहा है खाना. तो दैट आर गिवन, द मैसेज इज गिवन बाय रिसेप्टर्स. There are receptors in the eyes also. For example, you are watching the video. The video is been displayed in front of your phone, and your eyes are making an image of that, what you are receiving. And then the eyes have photoreceptors which are sensitive to detect light. Then ears have phonoreceptors. So we listen sound waves through our ears. Olfactory receptors are there in the tongue, and tango receptors are there in the skin for the touch. So these are the receptors. Effectors are the muscles and the glands which respond to the information from the brain and the spinal cord through the motor nerve. Effectors हमारी major muscles होते हैं, जैसे hands के muscles हैं, हमारे legs के muscles हैं. ये हमें ब्रेन से जो भी मोटर नर्व से हमें मैसेज मिल रहा है कि वी शुड होल्ड आवर फोन इन आवर हैंड, वी शुड टाइप द मैसेज. So these type of things effectors are doing. If we have to put some phone on the charging, we have to give command to our hand so that we can put and do the work. So voluntary activities and the reflex actions are performed with the help of muscles and the glands, which are effectors. Sensory nerves, the nerves which carry information from the receptors, sense organs to the brain. So nerves which are giving the message of touch and anything to our brain, that nerve is called sensory nerve. Motor nerve, the nerve which carry information from brain to that hand. तो हमारे ब्रेन में वापस हमें कुछ काम करना है, कुछ लिखना है, तो हमारे हैंड्स में ब्रेन से मैसेज आया जिस नर्व से, वो तो मोटर नर्व है. और जो हमने किसी गर्म चीज को टच करके हाथ हटाया, तो वो हमारा सेंसरी नर्व है जिसने पहचाना और मैसेज ब्रेन तक दिया. तो दिस इज द human nervous system. You can see that inside the head there is brain, cerebrum and cerebellum. Then you can see a fiber is coming from the brain, which is a spinal cord, and spinal cord is going inside the vertebral column, and in the back it is going, and it is producing various bundle and pair of nerves in whole back. And from the back also it is going, these nerves are going in the hands also, and in the lower portion it is going in the legs, reaching till toes. So our nervous system is spread, and it is separate, distributed into various nerves like brachial plexus, intercostal nerves, radial nerves, medial nerves, ulnar nerves, lumbar plexus, sciatic nerve, and common perineal nerve, and superficial peroneal nerve, digital nerve, sacral plexus. And human nervous system, parts of human nervous system are central nervous system consisting of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from the spinal cord.
So cranial nerves arise from the brain, and spinal nerves arise from the spinal cord. This is the thing. Our brain also produce few nerves which are spread in the facial region and in the cheeks, in the jaws, in the throat. So these are the these are the cranial nerves coming from the brain, and the spinal nerves are going in my hands, in my abdomen, and in my legs, as you have seen in the previous diagram, which was there. So you can see that diagram here also. You can see cranial nerves are in the facial part. In the face, you can see the nerves are present, and the spinal nerves are in the whole body. Here you can see there are two divisions, parasympathetic division and the sympathetic division. Parasympathetic division, you can see it constricts the pupil. Our pupil size is decreased here. Stimulate the glands, stimulates our salivary glands, and stimulates our gustation of the salivary. Means whenever we see our any food, then it stimulates the salivary gland, and it inhibits the heart beat. It becomes the heartbeat slow, and we are relaxed in the position. Constrict the bronchi. Our bronchi constricted at that time when we are eating. Stimulate the stomach. Mobility and secretion of pancreas and stomach is increased by parasympathetic because we are preparing for the digestion. Stimulates the intestinal also. It stimulates the intestines. So if we are in the rest and digest position, if we are eating the food, the parasympathetic division is stimulating these particular things and relaxing the heart, relax and contracts the bladder, and it also then coming to the, it also in the reproductive organ, it stimulates the erection. And here in the sympathetic division, which is the another an antagonistic to the parasympathetic. Parasympathetic division जो वर्क कर रहा है उसके अपोजिट वर्क करता है sympathetic division. It dilates the pupil को ये साइज को बड़ा करता है, and no effect on the its gustation stimulation. Its salivary glands पे कोई effect नहीं करता, and it accelerates the heart, constricts the bronchi, arterioles. So it stimulates the heart. It increase the heartbeat. Sympathetic division increase करेगा heartbeat को. It dilates the bronchi बढ़ा देता है. It inhibits the stomach function. Stomach function को रोकता है. Secretion of pancreas को भी रोकता है. It inhibits the it relaxes the bladder. Sympathetic division bladder को relax करता है, and it relaxes the ejection. Now human brain. ह्यूमन ब्रेन में आप पार्ट्स देख रहे हैं. 4 ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट्स आप अलग अलग कलर से आप देख रहे हो. फ्रंटल लोब इज एट द फ्रंट ऑफ ऑरेंज एंड ब्राउनिश कलर. Parietal lobe is at the mid and little backwards parietal lobe. Cerebrum, it's colorful, a whole part is cerebrum. Then temporal lobe is at the ear region. Occipital lobe is at the last region, which is by the eyes, which is giving signal by the eyes. Cerebellum is at the back, cerebellum. Brain stem is the base of the brain is the brain stem. And then we will go to the next parts of the brain के बाद. Brain or encephalon, like internal structure we see. Then the cerebrum is the shown in pink color, and is a brown band of fibers which is connecting one lobe of brain to the other, because it is also bilobed organ. And here we can see anterior commissure is there, and in the front there is optic chiasma, there are hypophysis, there is mammaliar body, and interthalamic commissure is there, and in the thalamus pineal gland is there, and aqueduct of Sylvius is there, and cerebellum, fourth ventricle, medulla oblongata, pons is there, and brainstem and
is there. So these are the internal structures. Few of them is not there in your NCERT. You have to learn only those which are mentioned in the NCERT diagram. Brain, it is protected by the cranium. We know that brain protective cover is cranium or brain box. It is covered by three membrane called meninges. It is filled with the fluid called cerebrospinal fluid, and which protect the brain from shock. It is shock absorbing fluid. Brain has three main parts, which is forebrain, consists of cerebrum, olfactory lobes are also there in the forebrain, and that means smell ka sense, olfaction is smell, is also controlled by forebrain. The thinking part of the brain control voluntary activities like touch, smell, hearing, taste, sight. Mental activities like thinking, learning, memory, emotions. These also are controlled by the forebrain. Midbrain control involuntary actions, reflex movements of head and neck and eyes. As you are looking toward me and listening, your head and eyes are focused on the screen and you are listening to my sound. So you will be focusing through your midbrain. Hindbrain is the consisting of cerebellum, pons, medulla. Its cerebellum control the body movements, balance and posture. Particularly, we are doing any very accurate movement, and it is because of cerebellum, like sports persons, like which athletes perform in the Olympics, and they produce specific long jumps, high jumps. So their cerebellum is strong in that. Pons is controlling respiration, medulla control heartbeat, blood pressure, swallowing. Now spinal cord. The spinal cord start from the brain and extend through the vertebral column. As you can see in the diagram also, you have seen that brain से last part से medulla से spinal cord बनती है और वो vertebral column में flow करती है. वहाँ प्रोटेक्ट रहती है. It has 31 pair of spinal nerves. उसके पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व निकालती है वो. इट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ब्रेन से मैसेजेस बॉडी में पहुंचाना, बॉडी से मैसेजेस ब्रेन में लाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है. इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती है. नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के. इट हैज सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. नर्व सेल में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है. पहला पार्ट नर्व सेल का सेल बॉडी है. सेल बॉडी में छोटे छोटे से फाइबर्स भी होते हैं कुछ निकलते हुए, जिन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं. इट हैज लॉन्ग फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एक्सॉन, जिसको प्रोटेक्शन कवरिंग से माइलिन शीट से वो कवर होता है. जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड साइनैप्स. दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को साइनैप्स कहते हैं. Messages that pass through the nerve cell in the form of chemical or electrical signals are called nerve impulse. जो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे में पास होता है थ्रू केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इम्पल्स कहते हैं. और डेंड्राइट जैसे ही रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है जो एक्सॉन के थ्रू पास होती है दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल. यहाँ पर हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं. जैसे हमने बात करी थी, सेल बॉडी राउंड स्ट्रक्चरल सेंट्रल बॉडी होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके साइटोप्लाज्म होंगे. उस साइटोप्लाज्म के बहुत फाइन एक्सटेंशंस होंगे, बहुत फाइबरस जैसे, जिसे डेंड्राइट बोला जाएगा. डेंड्राइट छोटे होंगे लेंथ में, और फिर एक लॉन्ग फाइबर यानी कि एक्सॉन रन करेगा, और उस एक्सॉन से मसल फाइबर पे एक्सॉन एंडिंग अपने मैसेज देगी. टर्मिनल एबोराइसन मतलब इसके टर्मिनल एक्सॉन के ग्रीन वाले एंड्स मसल्स में मैसेज देने के लिए अटैच्ड रहते हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो इफेक्टर्स करते हैं स्टिमुलस के लिए. कोई भी स्टिमुलस हमें मसल्स को मिलता है तो इफेक्टर्स कुछ रिस्पॉन्स देते हैं तुरंत. सडन एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता. जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, and then reflex action, our hand moves backward. The nerves in the skin receptor detect the heat and passes the message through the sensory nerve to the spinal cord. Then the information passes through the motor nerve. ये पूरा एक सर्किट होता है रिफ्लेक्स एक्शन में. रिफ्लेक्स आर किसी पाथवे को कहते हैं जिससे रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है. जहां पर एक रिफ्लेक्स आर्क में स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है? स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर.
चेंज को इन्वायरमेंट में पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया, सेंस ऑर्गन ने, और उसको पास किया थ्रू द सेंसरी नर्व से उसको पास किया टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में गया। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट इज पास टू द मोटर नर्व। रीले नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज को मोटर नर्व को पास करती है, जो कनेक्टेड होते हैं मसल से या ग्लैंड से। तो यहाँ आप देख रहे हो रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, दिस इज द पाथवे, रिसेप्टर्स आर द फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन is passing the message and it is the cell body of the axon of the cell neuron, sensory neuron, it is giving the message to a relay neuron. These are relay neuron and their cell bodies, and then this is the relay neuron, first one, and the first one relay neuron is uh, synapsing with the motor neuron. The next one, this one is the motor neuron, which axon is coming and it is going into the muscles पे आकर motor neuron ने activate किया. So this type of circuit is of the reflex arc. एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी ह्यूमन बीइंग्स में हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे हेल्प करते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में. एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं बॉडी में जो हमारे कंट्रोल करते हैं, हमको कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज को. एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन कौन है? We can see pineal gland is there, 1, 2 hypothalamus, 3rd pituitary, 4th thyroid gland, 5th parathyroid gland, 6th adrenal gland, 7th pancreatic gland, 8th testes and 9th ovaries. So these are the glands which are present. And example of coordination by endocrine gland is that we are frightened or angry, then the adrenal gland produces more adrenaline. Adrenaline is the hormone produced by adrenal gland. तो जब भी हम गुस्सा होते हैं तो हमारे एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन निकालते हैं जो ब्लड के थ्रू मिक्स होकर हार्ट तक जाता है, रिब्स की मसल तक जाता है, डायफ्राम तक जाता है, जिससे हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है. हमारी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स में पहुंचती है, हमारी बॉडी को या तो उस एंग्री वाली सिचुएशन से भागने की या उससे लड़ने की एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है. The pituitary gland produce growth hormones. The deficiency of this growth hormone in the childhood called dwarfism. अगर ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो डार्फिज्म हो जाएगा, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा. ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन का ग्लैंड का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. तो ये चाइल्डहुड में बनता है. पिट्यूटरी अगर कम बनाए तो बच्चा की हाइट बढ़ती नहीं है, कम रह जाती है, डुअर्फ हो जाता है, बौना हो जाता है इंसान. एंड अगर एक्सेस हो जाए इस हार्मोन का किसी भी रीजन की वजह से, पिट्यूटरी ज्यादा हार्मोन निकाले, तो बच्चा जाइंट बन जाता है, जाइंटिज्म हो जाती है. आयोडीन इज नीडेड बाय द आयोडीन नीड होती है थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए, और आयोडीन प्रॉपर मिले खाने में तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन थायराइड बनाता है. थायरोक्सिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के, इनको बॉडी में शरीर में अच्छे से मेटाबोलाइज करके बॉडी में एनर्जी देने के लिए थायराइड ग्लैंड का हार्मोन काम कराता है. और अगर हमारे पास आयोडीन नहीं है हमारे खाने में तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा, गला फूल जाएगा, एंड घेंगा रोग उसे बोलते हैं, गोइटर इसे बोलते हैं इंग्लिश में. पैनक्रियाज एक और ग्लैंड है जो हमारे दो हार्मोन्स बनाता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, जिसमें से हमें इंसुलिन पढ़ना है बिकॉज बुक में दिया हुआ है. इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, एंड इससे अगर इंसुलिन कम होगा, इसका लेवल कम होगा, पैनक्रियाज अगर इन्फेक्शन हो गया, पैनक्रियाज में इंसुलिन कम बन रहा है, अगर इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो डायबिटीज हो जाती है ऐसे पेशेंट को जिसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता. उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देकर ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में किया जाता है. टेस्टिस मेल में है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं. ये मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाती है टेस्टिस, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन इसीलिए बनाती है ताकि इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. मेल गैमेट है स्पर्म, उसके प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है. फीमेल प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन विच प्रोडक्शन ऑफ एग्स, जो कंट्रोल करता है एग के प्रोडक्शन को. तो फीमेल वही जो टेस्टिस मेल के लिए कर रही है टेस्टोस्टेरोन बनाने की, ऐसे ही फीमेल्स में ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन बनाया जाता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन से एग बनाती है फीमेल. तो यहाँ पर लोकेशन दिखा रखा है बहुत सारे ग्लैंड्स का. तो ब्रेन में हमारे दो ग्लैंड्स हैं, एक पिट्यूटरी और एक पीनियल बॉडी.
एंड देन हमारे नेक रीजन में, गले में सामने फ्रंट में 2 ग्लैंड्स हैं, थायराइड और पैराथायराइड। एंड देन हमारे हार्ट के पीछे होता है ग्लैंड थाइमस। देन हमारे किडनी के ऊपर ऐसे येलो कलर के ग्लैंड हैं, दोनों किडनी पे एक एक एड्रिनल ग्लैंड, जो अभी हमने पढ़ा, जो फाइट के वक्त एड्रेनलिन हार्मोन निकालकर हमारी मसल्स और हार्ट को ज्यादा तेज बीट करा रहे थे। किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। पैनक्रियास, पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा था, जिससे हमने कहा ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। ओवरीज के हार्मोन एस्ट्रोजन है, जो कि फीमेल में एग बनाते हैं। एंड टेस्टिस के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो कि स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बीइंग में थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, यहाँ पे कार्टून इमेजेस दिखा रखी हैं इनकी। एच शेप का लगभग जो ग्लैंड है, और बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हैं, वो थायराइड है। पिट्यूटरी मटर के दाने जैसा होता है। पीनियल ऑल्सो इज लाइक अ स्मॉल tiny round gland. Testes is also round and it is found in the scrotum. And salivary glands are like this, and a little globular, and it is made of lobes. And prostate gland is like that, tubular. And adrenal gland is like triangular shape. And ovaries are also very oval shape, and because they are producing eggs also. Mammary glands are little clustered and sac-like structure. Hypothalamus is like this, mushroom-like, and thymus is like bilobed organ, and bilobed organ है ऐसे करके, and in the back of the heart होता है। Parathyroid is like these 4 small tiny structures, and the names are also given here: thyroid, pituitary, pineal, testes, salivary, prostate, adrenal, ovary, mammary, hypothalamus, thalamus, thymus and parathyroid. Coordination in plants. Plants में कोई ग्लैंड की जरूरत नहीं बनती, बट प्लांट्स भी हॉर्मोन्स बनाते हैं। उनके ग्रोइंग टिप्स रीजन, जैसे स्टेम और रूट टिप्स में प्लांट हार्मोन बनाते हैं। प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज ड्यू टू द सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स इन्हें बोलते हैं। 5 मेन फाइटो हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, and abscisic acid and इथाइलिन। ये सब प्लांट हॉर्मोन्स हैं। ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल की डिवीजन बढ़ाता है। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन कराता है, ग्रोथ कराता है। जिब्रेलिन क्या करता है? हेल्प इन स्टेम एंड ब्रांचेस, इसकी हाइट बढ़ाता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? इंक्रीज सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये बनाता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड रोकता है ग्रोथ को, विल्टिंग ऑफ लीव्स को रोकता है। इथाइलिन हेल्प इन फ्लावरिंग एंड द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। इथाइलिन फ्लावरिंग और राइपनिंग, फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट कुछ मूवमेंट भी शो करते हैं। अगर वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं हार्मोन से, तो वो मूवमेंट भी शो करते हैं। 2 मेन तरह की मूवमेंट प्लांट शो करते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स या फिर नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही हैं। या तो प्लांट अपने सिग्नल के टूवर्ड्स जाता है, या प्लांट अपने सिग्नल से अवे जाता है स्टिमुलस से, डिपेंडिंग वो किधर को ग्रो कर रहा है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, लाइक फोटोट्रोपिज्म, जब लाइट की तरफ मूवमेंट होता है तो फोटो वर्ड, फोटो इज ऑलवेज फॉर लाइट, फोटोट्रोपिज्म। जब धरती की तरफ यानी अर्थ की तरफ जा रहा है, जियोट्रोपिज्म। जब केमिकल्स की तरफ जा रहा है, कीमोट्रोपिज्म। जब वो पानी की तरफ जा रहा है प्लांट का पार्ट, तो हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, एंड इफ द लाइट towards the light it is positive, then the example stem है। stem हमेशा पौधे की लाइट की तरफ जाती है, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। phototropic bending of the shoot towards the light, if it is away from the light we say that it is negatively phototropic। example roots नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। जियोट्रोपिज्म होता है ग्रेविटी की तरफ जाना। अब रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी, क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड द ग्राउंड एंड सॉइल, एंड स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ ट्रॉपिक मीन्स टूवर्ड मूवमेंट, तो अर्थ की तरफ मूवमेंट होगा रूट्स का। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की तरफ मूवमेंट है। वाटर, बिकॉज पानी हम लोग मिट्टी में ही पानी पौधे के जड़ों में ही देते हैं, तो
Roots are positively hydrotropic, growing towards the water. Chemotropism, chemicals की तरफ मूवमेंट करना. पौधे में केमिकल्स की तरफ मूवमेंट होता है तो वो कीमोट्रोपिज्म होता है. एंड लाइक पॉलन ट्यूब है. पॉलन ट्यूब प्लांट की जैसे स्टिग्मा पे और पॉलन ग्रेन आता है तो वो ओवरी की तरफ एक ट्यूब बनाती है जिससे उसे स्पर्म रिलीज करने होते हैं. That you can see here, the pollen grains are falling on the stigma. These are pollen grains coming from the anther, and these pollen grains will be able to make a pollen tube and going inside the straight into the. Here you can see this is coming. It is coming and releasing the sperm here, and then fertilization will occur. So I hope this is clear to you. The chemotropism. Nastic movements are also there. The next type of movements are nastic movement. They are non-directional movement. They are neither toward or away the stimulus. They are not directed towards stimulus. Nastic movements are random movements which are not growth dependent. If we touch the leaf of mimosa plant, छुई मुई plant के अगर पत्तों को और leaves को touch करोगे तो leaves बिल्कुल fold हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि उनमें वाटर का चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द लीफ स्वेल और श्रिंक. सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने प्लांट की मूवमेंट्स और प्लांट के कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस देखे. हमने ह्यूमन के एंडोक्राइन ग्लैंड देखे, उनके हॉर्मोन्स भी देखे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स देखी जैसे पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं बनता तो डायबिटीज होती है, और अगर थायराइड में आयोडीन नहीं लो तो गोइटर हो जाता है. एंड सेंस हमने रिफ्लेक्स आर्क देखी, एंड ऑल्सो वी सॉ रिफ्लेक्स एक्शन डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, parts of the neuron, spinal cord, brain. We have discussed the structure of the human brain, type of nervous system division, parasympathetic and sympathetic. Human nervous system, central nervous system, peripheral nervous system. Peripheral nervous system has the system which is coming from the nerves which is coming from the spinal cord. पूरी body में जो nerve बिछी हुई हैं, and they are called peripheral nervous system. एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स. इमेज आप देख रहे हो, एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक सिंपैथेटिक डिवीजन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है सेंटर में मिल रहा है, इसमें सिर्फ दो आ रहे हैं, एक ब्रेन आ रहा है, एक ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है बीच में. बट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ऑर्गन्स में जो नर्वस टिश्यू जा रहे हैं, या तो वो उसे सिंपैथेटिक तरह से वो उन ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन्स को एक्साइट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रहे हैं. पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट डाइजेस्ट वाला सिस्टम है. यहाँ पर रेस्ट करते वक्त जो होगा वो रेस्ट और डाइजेशन के वक्त मेन फोकस रहेगा फूड को डाइजेस्ट करने का, रेस्ट करने का. यहाँ पर जो एक्टिविटीज रहेंगी जैसे हार्ट बीट को बढ़ाना और पीपल को डायलेट करना, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस रहेंगी जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, क्योंकि हार्ट की बीट में तो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही एक्टिवेट होती है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक से अपोजिट काम करता है. देन हमने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखी, रिसेप्टर्स, इफेक्टर, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व के बारे में पढ़ा, और चेंजेस के बारे में पढ़ा कि स्टिमुलस चेंजेस को कहते हैं जो भी इन्वायरमेंट में होता है. कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, अपने सारे ऑर्गन्स हमारे सही से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने चाहिए, तभी हम केमिकल सब्सटेंसेस, तभी हम कुछ प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे. सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद क्लास 10th स्टूडेंट्स who are in the CBSE and they are preparing for their board exams, because here you get conceptual learning, and I hope you have enjoyed this video lesson. Thank you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below, and I will try my level best to solve your problems. Thank you. Your teacher with you, and I hope you have liked my video. Share and subscribe my study channel, Science Lab.